हाय ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो फिर से स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आइकन से कैट यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज अनिल चौधरी एंड टुडे वंस अगेन वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव सेशन ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। सो डीआई को लेकर कैट, स्पेशली कैट की जो डीआई है उसको लेकर स्टूडेंट्स वी आर रनिंग अ कंप्लीट सीरीज एंड आई बिलीव दैट ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कैट की बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी की है, अगले एक महीने आप इस सीरीज के साथ जुड़ जाएं and I'm very confident all the students who are going to learn a lot of things and DI को लेकर LR को लेकर जो एक एंजाइटी है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। एनीवे, जो आज जुड़ रहा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, वो सारे स्टूडेंट्स भी, इट इज माय सजेशन, जो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी इस चैनल पर अपलोडेड हैं, उन सब वीडियोस को अगर आप देखते रहोगे तो डेफिनेटली उसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। सो देयर आर 21 रिकॉर्डेड वीडियोस जो हमने पोस्ट किया, 2-3 ऑलरेडी स्ट्रीम्स हम लोग कर चुके हैं। इन सब को देखो, आप इसे एक चैनल को पकड़ लो स्टूडेंट्स एंड यू विल सी लाइक DILR को लेकर, मैथ्स को लेकर, ओके, एवरीथिंग वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस एंड प्लस जितने शॉर्ट्स आते हैं इन सारे शॉर्ट्स को भी स्टूडेंट्स आप देखते रहो। बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोग वहां पर शेयर करते रहते हैं। ओके, चलिए ऑल द स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन नाउ। तो अब आपके सामने आज का जो पूरा सेशन है, एक सेट आज अपन सॉल्व करेंगे, बट वो एक सेट आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। इट्स अ वंडरफुल सेट विच आई हैव बीन टेकिंग फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड आई बिलीव दैट अगर परसेंटेज पर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और कैसे हम लोग मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट, इन सब को समझें, तो इन सब के लिए स्टूडेंट्स इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि ये जो पर्टिकुलर सेशन है इसे हम लोग ढंग से जरूर देखें। और एक सेट आज अपन सॉल्व करेंगे, बट ये एक सेट अपने आप में स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज एंड दिस सेट इज इंडीड वेरी गुड। सो 3-4 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस, प्योरली अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑन परसेंटेज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले लेट मी आस्क अ फ्यू थिंग्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर क्लियर अबाउट, yes, how many students are clear about what is the meaning of, yes, how many students are clear about what is the meaning of market share? अगर किसी कंपनी का स्टूडेंट्स मार्केट शेयर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? yes, what is the meaning of market share? जैसे फॉर एग्जांपल there are in total 100 students who are taking CAT and 100 में से if 75 students are studying with us, तो 75% that becomes the market share of Icon Institute। तो कुल मिलाकर टोटल जो मार्केट होता है उसमें मेरी कंपनी का हिस्सा कितना है उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं मार्केट शेयर। ओके, सो माय कंपनी सेल अपॉन द टोटल सेल्स इनटू 100, सो दिस बिकम्स मार्केट शेयर। कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ रेट? नाउ ऑल द स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, sorry, I guess it is creating some problem. All the students do understand when I talk about growth rate. Now what does that mean? ग्रोथ रेट का बेसिक मतलब होता है स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के मुकाबले मेरी कंपनी की सेल्स में कितना परसेंट की ग्रोथ है। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज 2023 एंड इफ आई से दिस ईयर द ग्रोथ रेट इज 10%, दैट मीन्स 2022 में जितना मैंने सेल्स किया उससे 10% ज़्यादा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ग्रोथ रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। Okay, so you people have to first of all calculate the difference. इस साल what is the growth upon the value, the sales value of the last year into 100. So that becomes the formula to find out the growth rate. और इसी के साथ कुछ और बातें जो बहुत जनरल सी बातें हैं लेकिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। ऑल द स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड डेटा इंटरप्रिटेशन में कई बार ऐसे सेट्स होते हैं विच आर एक्चुअली प्योरली बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे एलिमेंटरी इंफॉर्मेशन जो सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस, दीज आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, कभी भी आपसे पूछा जाए वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट, तो कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट into 100।
So you people do understand profit upon cost into 100. This becomes the formula to calculate the profit percentage. मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ, हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं सेलिंग प्राइस का, विच इज रॉन्ग. कभी भी स्टूडेंट्स प्रॉफिट हम लोग सेल्स प्राइस का नहीं निकालेंगे अनलेस इट इज स्पेसिफिकली गिवन. ओके, हमेशा इस बात को ध्यान रखो. हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे किस पर? कॉस्ट पर. सो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100. सिमिलर इज द केस विथ लॉस. लॉस अपॉन कॉस्ट इंटू 100. ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना. कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, हम सुन तो लेते हैं बट जब वापस क्वेश्चन आता है वी कमिट द सेम मिस्टेक. तो स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. और डिस्काउंट परसेंटेज अपन हमेशा निकालते हैं मार्क प्राइस. So discount percentage is always calculated on the mark price. I hope all the students, you people understand what is cost price, what is selling price, what is mark price. है ना? तो ये elementary चीजें तो बिल्कुल clear होनी चाहिए. And CAT is more about working on basics. चलिए students, आज का question आपके सामने मैं लेता हूँ. Yes. So it's a wonderful question which is there on your screen and directions दे रखा है. A table is given to us. And it is an incomplete table. Okay, some values are missing and instead of those values alphabets are given. और उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, but on the basis of this table there are 3 questions which you people have to solve. Okay, तो सबसे पहले तो हमें इस टेबल में जितनी भी अल्फाबेट्स हैं इनके वैल्यूज निकालने हैं. कल भी स्टूडेंट्स में कुछ बच्चों को ये टेबल करवा रहा था एंड देन आई थॉट कि मुझे सभी स्टूडेंट्स के लिए इसको एक बार वापस से शेयर करना चाहिए. और ये एक सेट जब मैं करवाऊंगा तो बहुत सारी लर्निंग होगी. स्टूडेंट्स यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, जितने भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, उन सब स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है एक बार पॉज करो, अच्छी तरह से इसको गो थ्रू करो. ट्राई टू सॉल्व दी वैल्यूज फॉर ऑल दी कोड्स, द लेटर्स विच आर गिवन टू अस. उन सब की वैल्यूज पता करने की कोशिश करें एंड देन स्टूडेंट्स लुक and watch my explanation. Yes, सभी स्टूडेंट्स क्या लगता है हो जाएगा? Yes, yes, yes. Yeah. Sushri, good morning, good morning. Try solving this. Yes, and rest of the students come on. वैसे इन लाइव स्ट्रीमिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वैसे वीडियो जब भी आप चाहें इसको देख सकें एंड दैट इज द रीजन वी पीपल आर डूइंग दिस. एक बहुत अच्छा कलेक्शन रिसोर्स का तैयार हो जाना चाहिए. चलिए स्टूडेंट्स, अब इस पूरे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं. लेट अस सी. द टेबल बिलो गिव्स द सेल ऑफ 2 कंपनीज, पेडिग्री एंड इंडियाना, बोथ वैल्यू वाइज एंड वॉल्यूम वाइज, इन द ईयर 1997 एंड 1998. स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. चलिए, सबसे पहले डॉग इंडस्ट्री 97 and 98. This is 97 and this is 98. Okay. Now one company is pedigree, one company is Indiana, and total is given. But now you people do understand when I talk about this total, is it total of these 2 companies or is it total of the whole market? Yes. कोई भी चीज हम सॉरी कोई भी चीज हम प्रेज्यूम करके नहीं चलेंगे. क्या ये टोटल पेडिग्री प्लस इंडियाना का टोटल है, या फिर टोटल डॉग फूड इंडस्ट्री है, या फिर टोटल डॉग फूड इंडस्ट्री में ये 2 कंपनीज ही हैं? बिकॉज इन द लाइन्स अबव nowhere it has been given that these are the only 2 companies in the complete industry. So students don't make this presumption that these are the only 2 companies. कंपनीज इससे ज़्यादा भी हो सकती है. देखते हैं अभी क्या करना है. ये 97 और उसके बाद ये 98 में सेम पेडिग्री, इंडियाना एंड टोटल. अब स्टूडेंट्स रो वाइज दिस बिकम्स वैल्यू वाइज. वैल्यू का मतलब क्या हुआ? रुपीज में. वैल्यू का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? रुपीज में दे रखा है. एंड दिस बिकम्स वॉल्यूम वाइज. ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ टन्स. सेल्स इन रुपीज गिवन टू अस. दिस इज मार्केट शेयर. ओके, सो पेडिग्री का मार्केट शेयर है 37.5%. सो व्हाट आई मीन टू से इज जितना टोटल मार्केट है उसमें से पेडिग्री कंपनी का सेल्स है 37.5%. और 37.5% को अगर मैं रेशियो में प्रेजेंट करूं तो कितना होगा? 12.5% इज 1/8. So 37.5% it becomes how much? 3/8. Isn't it? Yes. ये सब कन्वर्जन हमको याद होने चाहिए. Then students, market share of Indiana is 25% and this is equal to 60,000.
and the market share of total market, obviously it is going to be of 100%. So total industry is of 100%, that becomes the market share. अब एक चीज आप लोग ध्यान में रखो, पेडिग्री का मार्केट शेयर 37.5 है, इंडियाना का 25 है. इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं स्टूडेंट्स तो इट बिकम्स 62.5%, whereas the total market share obviously 100% है. इसका मतलब है इस इंडस्ट्री में पेडिग्री एंड इंडियाना, besides these two companies there are a few other companies as well. Okay, point समझ में आया सभी स्टूडेंट्स? Do understand. So 37.5 and this is 25 and total is 62.5, जबकि टोटल तो 100% है. So there are few other companies besides these two. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. Yes. Now this becomes the growth rate, which is 50%. That means ये 97 है, तो 96 में पेडिग्री का जो भी सेल्स होगा उससे 50% ज़्यादा is the sales of पेडिग्री in 1997. I hope the point is clear. Okay, तो 96 की जो भी सेल्स है उससे 50% ज़्यादा. But anyway, the data for 96 is not given to us. तो A का वैल्यू इससे तो अपन निकाल नहीं सकते हैं ना. क्या कर सकते हैं? We will try to see. Now volume wise tons में again sales is given to us, market share is given to us and growth rate is given to us. And now this table has to be completed. चलिए स्टार्ट करें. बताओ मुझे समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? राइट, डन, ओके, समझ में आ चुका है तो वंडरफुल. अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, बिल्कुल कैट लेवल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यू विल रियली एंजॉय दिस डिस्कशन. अब 1997 में स्टूडेंट्स अब देखो सेल्स. ओके, दिस इज 37.5% मार्केट शेयर एंड बट टोटल मार्केट इज नॉट नोन. तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि अपन बी निकाल लें, टोटल मार्केट. अब सोचो स्टूडेंट्स टोटल मार्केट कैसे निकलेगा. अब इसके लिए एक बहुत बड़ा हिंट है. द मार्केट शेयर ऑफ इंडियाना इज 25%, whereas the sales of Indiana is 60,000. So 25% market share is equal to 60,000. That means 100% total market will be equal to how much? अगर 25% 60,000 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? बस in this way we can find out the total market. So students, 25% is 60,000, so 100% is how much? So this becomes 4 times. तो इसका 4 times अगर मैं करूँगा तो 2,40,000. Yes or no? If 25% is 60,000, so 100% becomes how much? It becomes 2,40,000. कोई डाउट है? पॉइंट समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. सभी स्टूडेंट्स ढंग से करना इसको, बड़ा मजा आएगा और बहुत सीखने को मिलेगा. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नाउ द मार्केट शेयर ऑफ पेडिग्री इज 37.5%, which is 3/8. Okay, 3/8. Now the total market is 2,40,000. मुझे उसका 3/8 करना है. So total market is 2,40,000. 1/8 is 30,000. So 3/8 becomes how much? 90,000. If you are able to calculate this, well and good. Otherwise students, तो simple mathematical तरीका है, आप लिखो and आंसर आ जाएगा. तो 2,40,000 चलो मैं लिख के बता ही देता हूँ का 37.5%. This becomes the market share of pedigree. So 37.5%, this becomes 3/8 and this becomes 30,000 into 3, that becomes 90,000. So pedigree का sales है 90,000. Okay, done. Now see students, pedigree का कॉलम कंप्लीट हो गया. इंडियाना के कॉलम में I is missing. Now what is I? It is the growth rate. What is C? It is the growth rate. Now growth rate of 97, that actually depends on the figures of 96. जब तक मेरे पास 96 के सेल्स फिगर्स नहीं होंगे, I will not be able to calculate the growth rate of 97, isn't it? So finally students, if you see, okay, I and C, I cannot find out the values until and unless I have the growth rate of 96. I hope the point is clear. तो फिलहाल स्टूडेंट्स मैं इतना इस टेबल को कंप्लीट कर सकता हूँ, दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. अब अपन चलते हैं सेकेंड ब्लॉक की तरफ and let us try to complete these alphabets. All the students, अगर आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो तो मेरा सजेशन है सभी स्टूडेंट्स को कि पॉज करके अब इस पूरे ब्लॉक को कंप्लीट करने की कोशिश करो.
एंड जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ उसे समझो। और एक बार ये स्ट्रीमिंग ऑफ होने के बाद यू पीपल शुड अगेन गो ऑन दिस वीडियो एंड सी द कंप्लीट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन विदाउट एनी विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स। ओके, एक बार दोबारा ट्राई करना और जब हो जाए तो कॉन्फिडेंट हो जाना कि सर यस आई हैव डन इट। चलिए आ जाते हैं स्टूडेंट्स 98 कैटेगरी इंजाना एंड टोटल। चलो सबसे पहले टोटल पर आते हैं। ठीक है, द मार्केट शेयर इज 100%, वो तो ऑब्वियस है, बट द ग्रोथ रेट इज 25%। इसका मतलब है 98 में टोटल इंडस्ट्री की ग्रोथ है 25%। आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर टोटल इंडस्ट्री की ग्रोथ 25% है तो 97 में टोटल इंडस्ट्री कितनी थी? 2,40,000। सो वॉट एवर द फिगर वॉज इन 97 उससे 25% ज़्यादा। So 2,40,000 का 25%. So that becomes 1 by 4. So 2,40,000, 1 by 4 of that is 60,000. So 60,000 becomes the growth of the total industry in 98. So 2,40,000 plus 60,000, that becomes 3 lakh. Yes or no? ओके, कितने स्टूडेंट्स को आंसर मिला? जितने भी स्टूडेंट्स बेटा अभी लाइव जुड़े हुए हैं फटाफट एक बार चैट बॉक्स में कुछ टाइप कर दो, जो मैंने बताया वो समझ में आया। 97 में स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे टोटल इंडस्ट्री 2,40,000 एंड द ग्रोथ इज 25%। तो 2,40,000 का 25% 60,000, अगर मैं ऐड करूंगा तो दैट बिकम्स 3 लाख। इज इट ओके? चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मार्केट शेयर ऑफ एच, मार्केट शेयर ऑफ पेडिग्री विच इज एच। मार्केट शेयर का मतलब है टोटल मार्केट में से मेरी कंपनी का सेल्स कितना परसेंट है। So I know the sales of pedigree is 1,80,000 and the total market is of 3 lakh. So 1,80,000 is what percent of 3 lakh? I guess it is bit easy. हर स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है। चलो ऐसे करो, 3 लाख का 10% कितना होता है? याद है ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। 3 लाख का 10% 30,000। मुझे कितना चाहिए? 1,80,000। So 30 into 6 is 180. So 10% is 30,000 and 60% becomes 1,80,000. If you are able to understand this, well and good. नहीं तो जो बहुत सिंपल सा तरीका है मैथ्स का वो तो कर ही लो। So students, 1,80,000 upon 3 lakhs into 100. So if you solve it, the answer is 60%. Okay, done. Now the growth rate of pedigree in 1998. Now see students, in 97 the sales of pedigree was 90,000. But now it has become 1,80,000. तो जो 90,000 था वो डबल हो गया। डबल होने का मतलब है देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 100%, isn't it? सोचो स्टूडेंट्स, जो 90,000 था दैट हैज बिकम 1,80,000। दैट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 90,000 अपॉन 90,000। सो अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा? दैट बिकम्स 100%। कोई भी नंबर जब डबल होता है इसका सीधा सा मतलब है देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 100%। अच्छा, इसे यूं समझें स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी देर मेरे साथ मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, इफ वन नंबर इज 120% ऑफ द अदर नंबर, वन नंबर फॉर एग्जांपल x इज 120% ऑफ y, तो टेल मी x y से कितना परसेंट ज्यादा है? इफ x इज 120% ऑफ y तो x y से कितना परसेंट ज्यादा है? 20%, isn't it? If x is 150% of y, so x is how much percent more than y? 50%. If x is 180% of y, x is how much percent more than y? Okay, that is 80%. Beta, try to understand. If x and y both are equal, sorry, just a second. Yes. If x and y both are equal, that means y is 100% of x. That means x is 100% of y. But now when I say x is 180% of y, तो ज़्यादा कितना होगा? 80%. When I say x is 200% of y, ज़्यादा कितना होगा? 100%. When I say x is 300% of y, so how much more? 200%. When I say x is 80% of y, how much percent less? 20%. But that is the point which you have to keep in mind. So here students, you understand 90,000 का 1,80,000 double,
डबल का मतलब होता है देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 100%. So there is a growth of 90,000 upon 90,000 into 100. तो ये हो गया स्टूडेंट्स 100% की ग्रोथ. सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको. This is 60% and the growth rate is 100%. Here the growth rate is 66.66%. Now when I say 66.66%, it becomes how much? 2/3, isn't it? 33.33% कितना होता है? 1/3. So 66.66% is 2/3. Now see students, Indiana में there is a growth of 2/3. So last year the sales was 60,000, उसका 2/3. The 60,000 का 2/3 होता है 40,000 and that becomes the growth. So 60 plus 40, this becomes how much? 1 lakh. So here students, the sales of Indiana is 1 lakh in 1998. जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वापस से सुनो. लास्ट ईयर इंडियाना की सेल्स कितनी थी? 60,000. और इस साल व्हाट इज द ग्रोथ रेट? 66.66, विच मीन्स 2/3. अब देखो 60,000 का 2/3 कितना होता है? 40,000. वो अगर मैं ऐड करूंगा तो दैट बिकम्स हाउ मच? 1 lakh. Isn't it? Now we need to calculate the market share of Indiana. Total market is 3 lakhs and its sale is 1 lakh. So 1 lakh upon 3 lakh, it becomes 1/3. और 1/3 का मतलब है 33.33%. So this becomes the total market share of Indiana. 33.33% because 1 lakh upon 3 lakh. So that becomes 1/3. Tell me students, ये पूरा वैल्यू वाइज वाला जो पूरा रो है, इज इट ओके नाउ? चलो जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कम ऑन फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करो, इज इट ओके नाउ? क्लियर? डन. फैंटास्टिक. बहुत ही बढ़िया. चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम वाइज की तरफ. नाउ वी आर कमिंग ऑन वॉल्यूम वाइज. इफ आई सी वॉल्यूम वाइज 97 में स्टूडेंट्स पेडिग्री KJT, no value is given here. So when no value is given here, nothing can be done. Okay, because कम से कम एक वैल्यू होगी तो ही तो स्टूडेंट्स आर बी एबल टू गेस अबाउट दी अदर वैल्यूज. So nothing is given, so we people have to hold on. Coming on Indiana, this is 22%, and whereas the total industry is 10,000 tons. So market share is 22%, and the total industry is 10,000 tons. So 10,000 का 22%, it becomes how much? 2,200. So yes, it becomes 2,200, isn't it? 22% of 10,000. Now what is this? This becomes the growth rate. On 97 का growth rate, it depends on the figures of 96. On 96 के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो इसीलिए we cannot find out the value of S. Okay, now coming on here. Now this is student 6,000. N becomes the market share. Total market is 15,000. So 6,000 is what percent of 15,000? If you calculate, it becomes how much? 40%. Sir, कैसे किया आपने? 15,000 का 10%, 1,500. And 15 4 जा, that becomes 60. Okay, so 10% is 1,500 and 40% is 6,000. So this becomes 6,000. If it is possible कि हम ऐसे फास्ट कर सकें, बहुत अच्छी बात है. नहीं कर सको, कोई प्रॉब्लम नहीं. जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो कर ही लो. एटलीस्ट आंसर तो मिलेगा ना. टाइम ही तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा. एंड बिलीव मी, अगर कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने कैट में सॉल्व कर लिया, द चांसेस आर वेरी ब्राइट. ओके, नाउ व्हाट इज P? दिस बिकम्स द ग्रोथ रेट. बट 98 का ग्रोथ रेट, it depends on the figure of 97. Whereas the figure of 97 is not given to us, so I cannot calculate the value of P. Now coming on students, let us calculate the value of M. Last year, the total industry was 10,000 tons. 97 में students अब देखो total industry की size क्या थी? 10,000 ton. Now this year 98. Okay, what is the size of total industry? 15,000 tons. तो 10,000 का 15,000 हो गया. कितनी परसेंट की ग्रोथ है? There is a growth of 50%. Isn't it? So 10,000 has become 15,000. So there is a growth of 5,000 upon 10,000. So bas 50%, that becomes the answer. Now there is a growth of 50% here. So last year students the sale was 2,200. अब 2,200 का 50%. 50% होता क्या? 1/2, half.
So 2200 का half कितना होता है? 1100. If I add it, it becomes 3300, isn't it? So 2200, 50% of that becomes 1100. Add करता हूँ तो it becomes how much? 3300. So Q का value आ गया 3300. And then students, market share, we can easily calculate. 3300 is what percent of 15,000? Yes, anyone? Can you give the answer? 3300 is what percent of 15,000? Come on. Sushri, Yash, everyone, come on, give the answer. Yes, I want you people to give the answer. 3300 is what percent of 15,000? चलो 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 जल्दी से आंसर दो सभी स्टूडेंट्स. यस, अगर इसको सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स हाउ मच? 22%. यस, आप लोग सॉल्व करके चेक करना सर कैसे आया. अरे बेटा और कुछ नहीं आवे तो मैंने कहा ना, इसको सॉल्व कर लो ना. 3300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 15,000? ओके डन. 20 चला गया, एक एक चला गया. 15 1 जा, 15 2 जा 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, so 2 जा 30, so it becomes 22%. ओके डन. चलिए अब स्टूडेंट्स जितना पॉसिबल था we people have actually completed. Okay, जितना पॉसिबल था we have done. Now there is some information which is given here. Let me see if this information can help us to find out the values of the remaining alphabets. Now see. The average price per ton of pedigree in 1997 is 2.5 times the average price of the dog food industry in 97. Okay, so this line is going to be very very crucial for us. Brilliant, बहुत अच्छी सी लाइन है स्टूडेंट्स, और मुझे लगता है इससे हमको K की वैल्यू पता चल जाएगी. कैसे मैं बताता हूँ. The average price per ton of pedigree in 97. अच्छा, all the students, how we people can find out the average price per ton? The total sales in rupees divided by the total sales in number of tons. Average price per ton, total sales in rupees upon the total number of tons. That's it. So students, pedigree का total sales कितना है? 90,000. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90,000 upon total number of tons of pedigree. Nothing is given, it is K. So this becomes average price per ton of pedigree. And this average price per ton is 2.5 times of 2.5 times of the average price of the dog food industry in 97. Now see students, the complete dog food industry in 97 sales कितना है? 2,40,000. and total number of tons कितनी है? 10,000. Okay, so total sales in rupees divided by total number of tons, this becomes the average of the total dog food industry. उसका 2.5 times, that becomes the average of pedigree, isn't it? So this line can be actually written in this manner in an equation. सभी स्टूडेंट्स, डेटा जो लाइन दे रखी होती है ना क्वेश्चन पर, सबसे पहले तो यू पीपल हैव टू लर्न तो उसे इक्वेशन के फॉर्मेट में हम कैसे लिखें. मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि दे कीप स्ट्रगलिंग इन दैट. ओके, मैं जानता हूँ इट्स अ वेरी लेंथी सेट, बहुत पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा, बट ये एक सेट नहीं है. जब आप एक सेट सॉल्व करोगे ना, मल्टीपल लर्निंग्स हैं, तो मुझे लगता है अगर 30-40 मिनट्स इसको समझने में अगर आप लगा दो तो इट्स वंडरफुल एंड द लर्निंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट. सो अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स अपन सॉल्व करते हैं. So 4 zeros चला गया 24 into 2.5, that becomes 60. So 90,000 upon K is 60. तो K कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 90,000 upon 60. ये यहाँ पर आ जाएगा. तो 90,000 upon 60, that becomes how much? 1,500. So this becomes the value of K. So K becomes how much? 1,500. तो अब K आ गया तो मार्केट शेयर भी आ जाएगा. Total market 10,000. So 1,500 is what percent of 10,000? 15%. So yes, J is also done. Now growth rate, that depends on the figure of 96. 96 के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, so nothing can be done. So मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अभी तक क्लियर हुआ? सुश्री नायक मैडम, समझ में आया? सुश्री बताओ बेटा, आप कहाँ से पढ़ रहे हो? You belong to which place? यस, चलो अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पर. ओके,
फैंटास्टिक। उड़ीसा के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड रिसेंटली वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो उड़ीसा से बिलोंग करती थी, राउरकेला से, एंड राउरकेला इज इन उड़ीसा आई गेस, या, एंड शी वेंट टू IIM रोहतक. Right now she is studying there, okay, for a 5 years integrated program in management जो 12th के बाद होता है, IIM रोहतक. Okay, she has gone there, सना कनेकर. चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अननोन्स, वी हैव एनीवे डन. नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं वापस आपको डेटा दिखाऊंगा एंड देन वी विल सॉल्व इट. What is the amount of profit for pedigree in 1997? The profit percentage is 20%. What is the amount of profit for pedigree in 1997? The profit percentage is 20%. Okay. Students try to understand. 97 में what is the amount of profit of pedigree if the profit percentage is 20%? Now see students, हमें पता है whatever the cost price is, अगर मैं उसमें 20% profit add करूँ so I should get the selling price. Whatever the cost is, 20% of that becomes the profit. And if I add a profit, that becomes the sales. सबको पता है ना, cost plus profit is equal to sales. And what is the profit percentage given? 97 में pedigree का 20%. So cost plus 20% profit, that becomes the sales. And see students, sales हमें क्या दे रखा है? 90,000. So whatever cost is, I don't know what is the cost. So I have written CP and I'm adding 20% profit to it. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका directly 120% ले रहा हूँ. 20% profit add करने का मतलब क्या है? आप cost का सीधा 120% ले लो. That itself means that you are adding 20% profit. Okay. So this becomes equal to sales. And what is sales? That is 90,000. ओके अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, 26 टाइम्स 25 टाइम्स 6 1 जा 6 1 5 15,000, 5 वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 75,000. सो दिस बिकम्स द कॉस्ट एंड द सेल्स इज 90,000. दोनों का डिफरेंस दैट बिकम्स द प्रॉफिट विच इज 15,000. तो स्टूडेंट्स मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. द करेक्ट आंसर इज 15,000. ओके, I guess all the students, you people have understood. Cost का 120%, that becomes sales. So anyway, cost is not given to us, so we have just assumed the cost to be CP into 120%, that becomes आपके sales 90,000. So we have got the cost. अब दोनों का difference, that becomes the profit. और वैसे बहुत सारे छोटे छोटे short tricks और भी हैं. जैसे for example, when I say the profit is 120%, when I say the profit is 120%, it becomes 1 by 5. 1 by 5. Now try to understand. If the profit is 1/5 of cost, it becomes 1/6 of selling price. I repeat, if the profit is 1/5 of cost, it becomes 1/6 of selling price. एक छोटा सा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स. ये तो ट्रेडिशनल मेथड है ही, अदरवाइज यू पीपल शुड रिमेंबर. In case of profit, here the profit is, if the profit is 1 by x of cost, okay, it becomes 1 by x plus 1 of selling price. स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना. if the profit is 1 by x of cost, it becomes 1 by x plus 1 of selling price. So here if the profit is 1 by 5 of cost, it becomes 1 by 5 plus 1, मतलब 1 by 6 of selling price. अब selling price कितना था? 90,000. तो 90,000 का सीधा सा 1/6 कर दो, कितना होता है? 1/6 of 90,000, that becomes 15,000. So straight away we have got the answer. Okay, हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट है and if the profit is 1 by x of cost price, it becomes 1 by x plus 1 of selling price. And अगर लॉस है and if the loss is 1 by x of cost price, it becomes 1 by x minus 1 of selling price. Okay, तो प्रॉफिट में हमेशा 1 by x plus 1 हो जाता है, लॉस में हमेशा 1 by x minus 1 हो जाता है.
तो ये पॉइंट समझ में आया सभी स्टूडेंट्स? ओके, यस, बताओ सारे स्टूडेंट्स। यादव, बिल्कुल, डन, वेरी नाइस। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, एंड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इवन दैट वी हैव सीन। और बेटा ये जो वीडियोस है ना, आप अपने जितने फ्रेंड्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जूनियर्स हैं, उन सबको इस चैनल के बारे में बताओ। ठीक है, अभी हमारा चैनल बहुत नया है, बताने वाले दिनों में देखोगे, जस्ट विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड विद इन अ ईयर और टू, वी पीपल हैव ग्रैंड प्लान्स कि हम लोग बहुत अच्छा काम करें इस पर। अब क्या, क्वालिटी वाइज भी एंड क्वांटिटी तो हमेशा फॉलो करेगी ही। वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी। तो आप बेटा इस बात पर श्योर हो जाओ, और अपने जितने जूनियर्स हैं, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उड़ीसा में, जो जो आपके सर्कल में जितने ग्रुप्स हैं, बस उन सबको एक एक फॉरवर्ड करते रहो। तो ये गुरु दक्षिणा आप हमको देते रहेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द एवरेज सेल्स ऑफ पेडिग्री फॉर 96, 97 और 98 इयर्स। एवरेज सेल्स ऑफ पेडिग्री फॉर 96, 97 एंड 98। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। एवरेज सेल्स ऑफ पेडिग्री फॉर 96, 97 एंड 98। पॉसिबली सभी स्टूडेंट जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड दे विल थिंक लाइक द करेक्ट आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज सर 96 का डेटा नहीं दे रखा है। बट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, लेट अस सी। हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, एवरेज बताना है। किसका एवरेज? पेडिग्री का। द सेल्स ऑफ पेडिग्री ऑफ 96, 97, 98। 97 में इट इज 90,000, 98 में इट इज 1,80,000। अब 96 का फिगर मुझे नहीं पता, तो वी नीड टू कैलकुलेट द फिगर ऑफ 96। कैन वी डू दिस? कैन वी डू दिस? कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि अपन कर सकते हैं? कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि अपन कर सकते हैं? यस यस यस। 96 का फिगर कितना है पता चल सकता है या नहीं? ओके, अगर चल सकता है तो कैन यू जस्ट टेल मी ओके हाउ मच इज इट? यस, द फिगर ऑफ 96, can we calculate? I'm just waiting for someone to give the answer. Yes, 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 everyone. Chalo, I'll tell you. Shall I give the answer? Or anyone is giving the answer? दे दो आंसर? चलो चलो चलो, मैं दे देता हूँ स्टूडेंट्स, डोंट वरी। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा हिंट क्या है? द ग्रोथ रेट ऑफ पेडिग्री इन 97 is 50% and the sales is 90,000. So that means after having a growth of 50%, the sales is 90,000. After having a growth of 50%, the sales is 90,000. तो सोचो स्टूडेंट्स, अगर 96 के फिगर को मैं x मान लूँ, ओके, तो उससे 50% ज्यादा है 90,000। तो कैन यू गेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बेटा करो ना आराम से। x का 150% शुड बी इक्वल टू 90,000। तो इफ यू सॉल्व इट, इट बिकम्स 3/2, एंड अगर इसको सॉल्व करोगे 30,000 एंड दैट, तो इट बिकम्स 60,000। बस हमें करना क्या है, इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ सेल्स इन 96 एज x, तो उससे 50% ज्यादा है द सेल्स ऑफ 97। सो x का 150%। वाई आई हैव टेकन 150%? बिकॉज 50% मुझे बढ़ाना है, तो आई कैन डायरेक्टली टेक 150%, तो दैट इज इक्वल टू 90,000। सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 60,000। तो 60,000 का 50% कितना होता है? 30। ऐड करूंगा तो 90 हो गया, क्रॉस चेक। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बड़ी अपनी स्मार्टनेस लगाते हैं। क्या करते हैं वो स्टूडेंट समझो, 90,000 का 50% करेंगे, और 90,000 का 50% 45,000, एंड दे थिंक लाइक 96 की सेल्स है 45,000, विच इज रॉन्ग। हमें 97 के सेल्स वैल्यू का 50% नहीं करना है, हमें 96 की सेल्स का 50% करना है और फिर ऐड करना है 96 की सेल्स में। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज नॉट 45, द करेक्ट आंसर इज 60। ओके, चलो 96 की सेल्स भी आ गई 60,000, अब बचा क्या? एवरेज निकालना है, बी निकाल देते हैं एवरेज। तो 3, तो कितना हो गया? 3,30,000 डिवाइडेड बाई 3, विच इज 1,10,000। ओके,
डन। तो क्वेश्चन हो गया। चलिए, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स। नहीं, वी आर नॉट अज्यूमिंग 50% ग्रोथ, इट इज गिवन देयर, इट इज नॉट एन assumption, इट इज गिवन देयर। ओके, अगर ये डेटा नहीं दे रखा होता तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस केस में अगर आंसर, अगर ये ग्रोथ रेट हमें नहीं दे रखी होती, तो इन दैट केस आवर आंसर वुड हैव बीन कैनॉट बी डिटरमिन्ड। ओके, so we can directly assume a 50% growth is given. Of course, of course, of course. इतना सब कैलकुलेट करने की जरूरत तो उसके लिए है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग बिकॉज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस, अगर किसी को पता चल जाता है कि सर 50% ग्रोथ एंड सेल्स इज 90,000, सो डेफिनेटली द आंसर 60, बिट ऑब्वियस। अगर ऐसे ही पता चल जाए तो सबसे बेस्ट है। चलो, कमिंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, coming on the last question, if the total cost incurred by Indiana in 97 and 98 is rupees 1 lakh, and the total cost for 1997 and 98 is 3:7. Okay, Indiana 97, 98. The total cost is 1 lakh and the ratio is 3:7. That means 97 में 30,000, okay, and 98 में it becomes 70,000, isn't it? इंडियाना का 97 और 98 टोटल मिलाकर 1 लाख and the ratio is 3:7. So that means 30,000 and 70,000. Then what is the profit percentage for Indiana in 1998? अब 98 में स्टूडेंट्स इंडियाना का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? Now this becomes the cost. सेल्स एनीवे मुझे दे रखा है, ओके, चलो चलते हैं टेबल पर। इंडियाना में 98 की सेल्स, दैट इज 1 लाख, ओके, so the sales of 98 is 1 lakh, so the profit becomes 30,000, isn't it? अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, so profit upon cost into 100, so profit is 30,000, cost is 70,000 into 100. Solve करो, you will get the answer. So it actually becomes 3/7. Okay, and 1/7 is 14.8%, and 3/7 becomes 42.84%. तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 42.84%. ओके, वैसे भी आप याद रखो 1/7 कितना होता है, इट इज 14.28%. तो जब मुझसे पूछा गया 3/7 तो बस इसका 3 टाइम्स करना है, सो इट बिकम्स हाउ मच, 42.84%. रेशियोज अगर याद है तो इट बिकम्स इजी. So the correct answer is 42.9%. Isn't it? Yes. तो सारे students, by this the question gets over. तो आज मैंने इसीलिए एक ही सेट लिया था बिकॉज मुझे पता है कि इसी पर मुझे 40-45 मिनट्स आई विल हैव टू स्पीक. एंड आई गेस सबको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा. एंड आई मस्ट टेल ऑल द स्टूडेंट्स, जस्ट जुड़े रहो हमारे साथ. और आप देखो कैट में आपके 10-15 परसेंटाइल तो केवल इन सेशन से ही बढ़ जाएगा. अंडरस्टैंड, गिव योर बेस्ट एंड wherever you have any suggestion for us, do let us know in the comment box. अगर ये सेशन अच्छा लगा, चैट बॉक्स में तो आप टाइप कर ही रहे हो, सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर कुछ ना कुछ अच्छा मेंशन करें. that will become a morale boosting for us. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक्स. डन. ओके, बाय बाय, सी यू सून. अपना नेक्स्ट लाइव होगा बेटा मंडे को. So we are going to have the next live session Monday दिन में 12 बजे. Okay, done.